कहीं धर्मांतर कर रहे हैं आप उसके ऊपर। तो ये जो संस्था है, यहाँ तक कि मदर तेरेसा की संस्था जिसका दुनिया भर में नाम है, उसका भी वहां पर भी हरासमेंट चल रहा है। उसी ढंग से कर्नाटक में जो एंटी कन्वर्शन बिल ला के वहां पर भी क्रिश्चियनों को तंग किया जा रहा है। तो भैया आप किस चीज को तंग करना चाहते हैं? खैर सभी लोगों को भेजना चाहते हैं, माइनॉरिटीज को भेजना चाहते हैं, क्रिश्चियन को भी भेजना चाहते हैं, दलितों को तंग और तबाह कर रहे हैं, महिलाओं का शोषण कर रहे हैं सब, और ऊपर से बोलते अच्छे दिन लाएंगे, सबका साथ, सबका विकास, और क्या सबका प्रयास, क्या हाँ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन यहाँ तो सबकी बर्बादी हो रही है, सबकी बर्बादी हो रही है। चर्च टूटे जा रहे हैं और चर्च के बारे में सभी मौन धारण किए, कोई भी बोले नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन समाज है और वो अच्छा काम करते हैं, शिक्षण देते हैं, हेल्थ केयर की काम करते हैं। तो वो लोगों को, और बहुत से लाभार्थी यहाँ हैं, बहुत से लोग अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी स्कूल में पहला वोट लगा देते हैं, और ऐसे लोग उसी संस्था में जाके चर्च को तोड़ना, चर्च को ये करना, ये आपका, और वो भी यीशु ख्रिस्त के जन्मदिन पर वो 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 31 दिसंबर को ऐसी चीजें इस देश में हुई। ये तो मैं खंडन करता हूं। जो क्रिश्चियन समाज पे आज एक उनको दबाया जा रहा है, उनके आवाज को दबाया जा रहा है, उनके धर्म को दबाया जा रहा है, और गलत इल्जामात लगाकर आज उनको जो कह रहे हैं, इसका मैं खंडन करता हूं। और प्राइम मिनिस्टर साहब, आप खुद इसके बारे में सोचना चाहिए, बुलाइए, बात कीजिए, उनके समस्याओं को सुलझाइए। लेकिन ऐसा अपने चेले चपेटों को भेजते रहेंगे और वो बर्बाद करके वापस आएंगे, इससे कोई देश का हित नहीं होता, देश के लिए ठीक नहीं है। तो गंगा में तो खैर आप नमोमि गंगा, ये तो आप बहुत पैसे भी खर्च किए, लेकिन फिर भी गंगा मैली है अभी भी। तो गंगा में डुबकी भी लिए, खैर सर दिख रहा था साहब मेरा, आपका, सॉरी। तो पूरा नहीं, मैं मेरा जिस जगह लेना है मैं लेता हूँ, मैं आपको पूछ के नहीं लेता, या टीवी को दिखाने के लिए नहीं देता, या लोग देखे मुझे इसलिए नहीं करता। मैं अपने हाथ में साक्षी से करता हूं जो कुछ करना है, और आप लोगों को मालूम है मेरे विचार क्या है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये भी लाकर आपने ये कहा, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट तो एजुकेशन के लिए एक राइट टू एजुकेशन का हमने ये किया। तो कांग्रेस विच ensured that education is recognized as fundamental right of every Indian। हम तो इसको फंडामेंटल राइट करके एजुकेशन के लिए भी बहुत कुछ मान्यता दी, लेकिन आप उसको नया दिशा में लेके जा रहे हैं। आरएसएस के सिलेबस तैयार हो रहे, वो सब आ रहे एक के बाद एक, उसके लिए आप जरा ध्यान में रखिए। और कोविड का तो बहुत क्रेडिट लिया गया, और शुरू प्रारंभिक भाषण में कोविड के बारे में 3-4 पेजे उसमें बताई गई, और आप भी बार बार कोविड के बारे में कहा। ठीक है, जब कोविड की दूसरी लहर आई तब तो आप फेल हो गए। कोविड के दूसरे लहर में जो करना था उसका प्रिकॉशन नहीं लेने के वजह से आप बहुत से पूरे, अगर आप स्टैटिस्टिक्स रियल डाटा अगर निकालेंगे, साहब 50 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो गई रास्ते पे। अब
रेलवे प्लेटफॉर्म पे हर जगह, और जलाने को जगह नहीं है, और जो गंगा नदी में तैर रहे थे बहुत से ये मौतें, तो ये जो है सारे लाशें तैर रहे थे। और ये टीकाकरण की जो आपने बात की, इसमें तो आप अभी 50% है। कल मैं इकोनॉमिक सर्वे देखा, उसमें 49% समथिंग आपने उसमें बताया है। तो जब आपके इकोनॉमिक सर्वे में अगर वो है, तो ये फिगर कहाँ से आ गए? 57% तक हमने दिया, फलाना दिया वो। तो ये आप पहले देख लीजिए, देखकर दुरुस्त कर लीजिए, दुरुस्त करके फिर सदन के सामने आइए, ये मेरा कहना है। और कोविड से जो आपने ये कहा था, कोर्ट ने कहा है कि हर एक को 50,000 रुपए मुआवजा देने का कहा है। तो आप कितना दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, कितने लोगों को दे रहे हैं अभी, तो ये भी हमको मालूम होना चाहिए। हमारी पार्टी तो जो मृत लोग हैं उनको 4-4 लाख देने की मांग की थी, और मैं खुद आपसे मिलके जो अपना लेटर दिया, सोनिया गांधी जी का लेटर दिया, मनमोहन सिंह जी का लेटर दिया, हम जो लेटर लिखे थे, राहुल गांधी जी ने, मैंने, सभी ने, वो आपको मिलके आपके घर में मैंने वो दे दिए थे। लेकिन उसमें क्या हुआ उसके बाद में, क्या मेरा लेटर अपवित्र था क्या मुझे मालूम नहीं, तो एक्शन तो उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। और आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, ये देखिए साहब, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, सब ये तो आप तो हर पैसे का हिसाब देने के लिए तैयार है। तो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, हम भी उसमें हमारे पैसे भी जुटे हैं, जवानों के पैसे जुटे हैं, एनजीओज के पैसे जुटे हैं, हाँ एनजीओज के पैसे जुटे हैं, दूसरे लोग भी पैसे उसमें डालें, फैक्ट्रीज वाले, बड़े बड़े उद्योग, उसका हिसाब दीजिए। क्यों छुपा रहे हो? क्या उसमें क्या है? आप तो कोई बात छुपाना नहीं चाहते, ट्रांसपेरेंसी है ना आपकी। जब ट्रांसपेरेंसी आपका है तो इसके ऑडिट क्यों नहीं होना? सीएजी रिपोर्ट में क्यों नहीं आना चाहिए? ये सारी चीजें, आपका ट्रस्ट एक अलग ही हो गया, क्योंकि उसको अलग कानून मैंने बना लिया, इसीलिए किसी के सामने ये हिसाब देने की जरूरत नहीं है, किसको पूछने की जरूरत है। जो कुछ भी है वो मेरे पास है, मैं जिसको दूंगा उसी को दूंगा, वो मेरा है, ये आपका नहीं साहब, ये देश के जनता का है, देश के लोगों का है। वो विश्वास रख के आपको दिए, उसका हिसाब तो आप देना ही पड़ेगा। मैं डिमांड करता हूं उपसभापति जी, उसका हिसाब आप दे, किस किस चीजों के लिए आपने खर्च किया, कहाँ खर्च किया, किस बात पे खर्च किया, कितना जमा हुआ, वो भी हमको बता दीजिए। उसके बाद में लेबर वेलफेयर, ये क्या है साहब? ये लेबर के 4 कानून जो है बड़े मुश्किल है, इसको आप वापस लीजिए। जैसा किसान के 3 कानून वापस लिए, वैसा ये लेबर के लिए बहुत नुकसानमंद है, क्योंकि कोई भी किसको भी डिसमिस कर देता है। ट्रेड यूनियन को स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है, हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, यूनियन के पास यूनियन की बात कोई नहीं सुनता है। तो इसीलिए अगर लेबर की बात को मनवाना है, मानना है, तो इसको लेबर वेलफेयर का ये 3 कानून को भी आप वापस लेना चाहिए। और आपको मैं यही कहूंगा। माननीय एमपी साहब, समय चूंकि आप खुद तय करते हैं, आपको सूचना के लिए महज कह रहा हूं कि आपके 5 स्पीकर्स और हैं जिन्हें आपने समय दिया, आपने लगभग 1 घंटे लिए हैं, तो आप बाकी लोगों के लिए समय का देखिए। मैं आपको हाथ जोड़ के नम्रता से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि बहुत दिन के बाद ये सदन सुललित रूप से चल रहा है, विषय को रखना है। मैं ज्यादा आपके दिए समय पर ही मैं आपको याद दिला रहा हूं।
मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेता हूं। मेरा समय नहीं, आपकी पार्टी का समय जो आपने दिया था वही मैं आपको बता रहा हूं। मेरे पार्टी को भी उसका समय एक्सटेंड करना ये आपके हाथ में है। मेरे हाथ में नहीं, ये बीएससी ने तय किया, वही समय हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता, और जीडीपी ग्रोथ के बारे में तो फिर वो हमारे नेता लोग फिर बजट में कहेंगे, फिर जिस ढंग से ये अपने फिस्कल पॉलिसीज उसमें क्या क्या किया वो भी उन्होंने वो बात भी कहेंगे। फिर उसके बाद में जब मनमोहन सिंह जी डिमोनेटाइजेशन की बात आई थी तो उस वक्त उन्होंने कहा तो वो मजाक उड़ाया गया। उन्होंने ये कहा उस वक्त कि भाई ये तो ऑर्गेनाइज्ड लूट है, लीगलाइज प्लंडर है, मॉन्यूमेंटल मिसमैनेजमेंट है, ये तो नोटबंदी नहीं होना चाहिए था तब। और उसके बाद में वो ये अपना नोट बैन इज एन अनडेमोक्रेटिक मूव लाइक एन अनगाइडेड मिसाइल फायर्ड यूनिलैटरली, ये अमृता सेन की बात है और उन्होंने ये बात कही। इसीलिए जीएसटी और जो डिमोनेटाइजेशन लाए, ये सारी चीज़ों के लिए आज ये चीज़ें हो गई है। इसीलिए मैं ज़्यादा अब वक्त नहीं लेता, क्योंकि आपने ये को याद दिलाए। नहीं, मैंने नहीं याद दिलाया, आप घंटे भर पूरा कर ली, आपका समय है, ये समय आपका है, आपने रिलोकेट किया, मैंने नहीं। प्लीज देखिए, और एक चीज मैं आखिरी बोल के मैं समाप्त करता हूं साहब। और एक चीज, आप हर जगह अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ ये ईडी इस्तेमाल करते हो या सीबीआई इस्तेमाल करते हो और आईटी का दहाड़े डालते हो। ये पॉलिटिकली मत कीजिए। अगर इकोनॉमिकल ऑफेंस है उसके तहत जाइए। कोई आपके पार्टी से इधर आ गया दहाड़ देते हैं, कोई इस पार्टी से उधर गया तो उसका सब छुप जाता है। ये क्या है? हाँ? कोई एमपी डिफेक्ट हुआ उसको टिकट भी मिलता है और ईडी के केस भी बंद होते हैं। और कोई एमएलए आपके पास आता है, वहां हुकूमत बनती है गोवा में, कर्नाटक में और किसी जगह, तो वहां पर गुजरात में, मणिपुर में और जगह, तब आप उसको वो फाइल को रोक देते हैं, तो बंद कर देते हैं। तो बोलिए खुल जा शमशम बोल के सबका खुलिए। तो इसलिए मैं, क्योंकि सर ये बड़े बड़े जो काम हमने भी किए थी, लेकिन आपने भी जो काम किए थे उसकी गिनती इसमें आई है। लेकिन अभी कुछ बोलना था, लेकिन मेरे को समय, आपने ठीक कहा कि दूसरों को भी समय देना चाहिए, लेकिन ये मैं पुनः आपको आग्रह करूंगा, चूंकि पार्टी का समय आप तय करते हैं, आपने अपने लिए 30 मिनट तय किया, आप पूरा समय ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन समय के अनुसार बीएससी में जो आप तय करते हैं वही। नहीं, मैं फिर आऊंगा, हमारे चीफ व्हिप के साथ मिलूंगा, फिर आपकी दिल जीतने की कोशिश करूंगा। तो सर मैं आपको कहूंगा, जो दे रहे हैं फल तुम्हें, जो दे रहे हैं फल तुम्हें पके पकाए हुए, जो पेड़ तुम्हें मिले हैं लगे लगाए हुए। तो ये जो आईआईटी वो ये सब जो डेवलपमेंट एजुकेशन ये सब हमारे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हैं, ये तो लगाए हैं पेड़। तो इसीलिए ये हमने ये किया है। और अब तो ये चीजें हमने की है, हमने लगाई है, इसका फल सबको मिल रहा है। आप क्रेडिट लो, आप नए नए बोर्ड लगाओ, नए नाम करो, क्योंकि नेहरू जी के नाम से तो आपको नफरत है, उनके संस्थान का कुछ नहीं, नाम बदलते ही रहते हैं। सर आखिरी में एक बात कह के मैं खत्म करता हूं। ये बात मेरी है कि अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे, जुबा तो खोल
नजर तो मिला, जवाब तो दो, मैं कितनी बार लुटा हूं इसका हिसाब तो दो। धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया, आपका संयम, इसीलिए मैं प्रशंसा, और 10-15 मिनट अगर मेरी पार्टी को होना है तो प्लीज वो कर दीजिए। धन्यवाद। अपनी पार्टी का, आपने अपनी पार्टी का 1 घंटे 6 मिनट लिए हैं लगभग, वो रिकॉर्ड के लिए मैं कह रहा हूँ। एवरीथिंग माननीय सुखेंदु शेखर राय जी को मैं आमंत्रित करता हूं। इसके पहले 1 मिनट, जयराम जी, मैं सदन की सहमति हो तो हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय डॉक्टर राम गोपाल जी, वो कल हाउस में नहीं होंगे, वो बाहर जाना चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं, तो आपके बाद अगर अनुमति हो तो मैं राम गोपाल जी को बोलूंगा। मैं, क्योंकि मेरा 2 स्पीकर है तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, रामगोपाल जी आसानी से बोल पाएंगे। आप बोल रहे, उसके बाद मैं माननीय रामगोपाल जी को बुलाऊं। ठीक, पहले सबको जाने दीजिए सर, फिर मैं बोलूंगा। मैं 1 मिनट लेता हूं, सबको जाने दीजिए प्लीज। कृपया बैठे, माननीय वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं, प्लीज। Sir, upon hearing the address of President of India, the immediate reaction that kept in my mind was that it was a conceited, self-promoting charlatan. It was reminded me of old ghazal of Sahil Ludhianvi. The ghazal was composed by Rabi, और ये गाया था महेंद्र कपूर जी ने। 1973 फिल्म, और फिल्म का नाम था ढूंढ। इस फिल्म में जो गाना कंपोज किया था रवि जी ने और साहिल लुधियानवी जी ने लिखा था, मैं 4 लाइन पढ़ना चाहता हूँ। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है ना जाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है, इतना ही फसाना है। Sir, to me the entire speech of the Honorable President is covered with dhund or mist. Now let me unfold the misty scenario projected in the President's address. Firstly, in paragraph 14, the Honorable President has quoted from Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar, which said, and I quote, "My deal would be a society based on liberty, equality and fraternity," unquote. What is the performance of this government insofar as the equality is concerned? I am putting this question to me, sir, and back comes the reply that one should go through Oxfam report published in January this year, which inter alia says that the income of 84% of households in the country declined in 2021, but at the same time, the number of Indian billionaires grew from 102 to 142. The Oxfam report, released ahead of the World Economic Forum's Davos agenda, also found that the country's healthcare budget saw a 10% decline from revised estimates of 2021. There was a 6% cut in allocation for education, the Oxfam report says, while the budgetary allocation for social security schemes declined from 1.5% of the total union budget to 0.6%. The India supplement of the global report also says that in 2021, the collective wealth of India's 100 richest people hit a record high of ₹57.3 lakh crore or 775 billion US dollar. In the same year, the share of bottom 50% of the population in national wealth was a mere 6%. Indians, meanwhile, are estimated to have fallen into extreme poverty in 2020, nearly half of the global new poor, according to the United Nations. The report says this surge comes at a time when India's unemployment rate was as high as 15% in urban areas and the healthcare system was on the brink of collapse. Sir, according to Oxfam India CEO, he said that, quote,
stark reality of inequality, contributing to the death of at least 21,000 people each day, or one person every 4 seconds. Sir, this report also indicates that a particular company which ranked 24th globally and second in India witnessed its net worth multiply by 8 times in a span of 1 year, from $8.9 billion in 2020 to $50.5 billion in 2021. And another company, its worth doubled in 2021 to $85.5 billion from $36.8 billion in 2020. So this is the economic disparity that has occurred in the last financial year in India. Sir, the Oxfam report also points out to the increase in indirect taxes as a share of the union government revenue last 4 years, while the proportion of corporate tax in the same was declining. The additional tax imposed on fuel has risen 33% in the first 6 months of 2021 as compared to the last year, 79% more than pre-COVID levels. At the same time, the wealth tax for the super rich was abolished in 2016. So, lowering of corporate taxes from 30% to 22% to attract investment last year resulted in a loss of 1.5 lakh crore, which contributed to the increase in India's fiscal deficit, the report says. And there was no increase in private investment in spite of so much avenues given to them by the government. Sir, the report further says that despite country's federal structure, the structure of revenue kept the reins of resources in the centre's hands, and yet the management of the pandemic was left to the states who were not equipped to handle it with its meager financial or human resources. Sir, now, if you go through this, this is the real picture of equality, sir. This is how this economic disparity has affected the entire nation, not only during COVID, but even before and after that. Sir, this is the real picture of inequality among the richest, rich, middle class, marginalized, and the poorest of the poor of the country. What a splendid achievement of this NDA government for the past 7 years. Sir, according to estimates by Center for Monitoring Indian Economy, 2 crore Indians, they lost their jobs in April-May 2021. In October 2021, at least 5.46 million Indians lost jobs, and in November last year, 6 million salaried jobs were lost. There is no whisper in the President's address about this alarming joblessness in the country due to policy paralysis of the union government. And, sir, and this government assured that there will be creation of jobs for 2 crore unemployed youth every year, and this is the real picture that the Center for Monitoring Indian Economy they have assessed. Sir, let us see what the Honorable President has stated in paragraph 79 of his speech. Only one line I would like to quote with your permission. Quote, "Today, the country's achievements and success are as limitless as the country's potential and possibilities." Sir, this, sorry, sir. In paragraph 79, I have mentioned the President's address, but according to Oxfam report again, published in January 22, India falls in all international indices. For example, Human Development rank is 131 out of 189. In Hunger Index, India's rank is 94 out of 101 countries. Peace
139 out of 163. Happiness, 144 out of 153. Healthcare, 145 out of 195. Gender gap, 140 out of 156. Environment, 168 out of 180. Internet quality, 79 out of 85. Water quality, 120 out of 120. Per capita GDP, 142 out of 189. Health expenditure as percentage of GDP, one of the lowest in the world. Expenditure on education is among lowest in the world. National Education Policy of 1968 recommended for spending 6% of GDP for education, but so far we have only invested allocated 3%. ऐसी सफलता के साथ देश आज अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। अमृत 142 बिलियनियर पी रहे हैं और देश की आम जनता जो पी रहे हैं वो अमृत नहीं है, हलाहल है, हलाहल। जैसे कि समुद्र मंथन के समय प्रभु महादेव हलाहल पी के नीलकंठ हो गए थे, हमारे आम जनता का नसीब में आगे जो हलाहल काल आ रहे हैं, न जाने क्या भयंकर स्थिति पैदा होगी। ये सरकार बोलते हैं बहुत, ये सरकार बोलते हैं बहुत, लेकिन इसकी असलियत क्या है? मधुतिष्ठति जीवभाग्ये हिदयेतु हलाहलम। Sir, there are other achievements too of the government. For example, the surgical attack on the federalism, which otherwise is a basic structure of the Constitution as ruled by the Supreme Court of India. The Home Ministry has recently extended the jurisdiction of Border Security Force from 15 kilometers to 50 kilometers in the states bordering with Bangladesh and Pakistan without having any discussion with the concerned states. This unilateral decision on the part of the central government is an attempt of coercion upon the elected state governments having international borders. Similarly, the recent fatwa proposing amendment to IS cadre rules is arbitrary and a veiled attempt to centralize executive powers of the states. Already 9 chief ministers and 109 retired IS, IFS, ITS officers have vehemently opposed this unilateral and arbitrary decision of the union government. Sir, constitutional heads in the opposition-ruled states are behaving like political functionaries and interfering with the day-to-day administration of the states and challenging the policy decisions of the opposition-ruled states of the governments. And day in, day out, they are coming out with press statements criticizing the state governments. So this is unprecedented, and this is a surgical attack on our federal structure. Sir, assault on constitutional, and because this government has forgotten the first article of the Constitution of India, the very first article. Article 1 of the Constitution says, and I quote, India, that is Bharat, shall be a union of states, not a unitary state. But these steps are actually supporting to form this country, transform this country into a unitary state to help strengthen the passage of totalitarianism. Sir, assault on constitutional and statutory institutions like Election Commission of India, CVC, CNEG, CBI are well known. They are also being exploited for political advantage of the ruling party and against the opposition parties. Sir, most of these institutions have turned to be breeding grounds for selected group of retired government servants who are not only being appointed by the government to serve them beyond their service tenure, but also getting extension after extension in their extended service career. But the government is not too much satisfied with that only. This is why, on the National Voters' Day, the Honorable Law Minister said, and I quote, "In the name of independence of judiciary, independence of election commission, independence of legislature and executive, if there is no coordination, then how will we work?"
how will one run the country, unquote. Hence the government wants to have a committed judiciary, a conducive election commission, and the agencies, so and so forth, in the name of so-called coordination. Sir, the President's speech has not addressed this growing problem of attack on time-tested institutions and authorities. Sir, in the name of economic reforms, the government has emerged as a Vikreta Sarkar, a seller's government, inasmuch as it has decided to sell out almost all public properties. These are PSU banks, insurance companies, and even profit-making public sector enterprises. Sir, PSU banks earned net profit of rupees 31,820 crores in 1 year, that is last fiscal 2020-2021, which is the highest in last 5 years. Sir, yet government wants to sell PSU banks to private sector, for which Banking Nationalization Amendment Act is reportedly in the offing. The government policy is to privatize profits of public sector on the one hand and to nationalize losses of private sector on the other. I am giving one example. Vodafone Idea, the private telecom company, owes the government rupees 1,70,000 crore, whereas rupees 16,000 crore shall be invested by government in their share capital. Is this not crony capitalism? On the one hand, bad loans written up by public sector banks from 2001 to 2021 amounts to rupees 9,88,160 crores. In 2021 alone, rupees 1,31,894 crores was written off. On the other hand, the public sector banks have reduced rate of interest on savings account from 6% to 2.9%, and in fixed deposits from around 12% to 5% in detriment to the interest of the common people. Mostly affected are senior citizens. Sir, this is something like rob Peter to pay Paul. Sir, in spite of such writing of bad loans, it has not come down. According to estimates, new bad loans during 2021 figured as rupees 2,02,879 crores. As on 31st March 2021, loan amount due to a very surprising figure, sir. As on 31st March 2021, loan amount due in top 4 NPA accounts of public sector banks stands at rupees 89,300 crores. Who are these big fishes? Who have eaten public deposit from public sector banks? Why has not government shown any courage to name them, not to speak of taking criminal action against them for open loot of public money? Sir, I am sorry to say the President's address does not reflect anything about the measures supposed to be taken by the government to arrest this unholy nexus. Sir, such is the case of revelations made by international consortium of investigating journalists through Panama Papers, Paradise Papers, and of late, the Pandora's Papers. More than 1,000 Indians have stashed black money outside the country in the offshore tax haven. How many of them have been arrested? How much black money has been recovered? Publish a white paper. I urge upon the government to publish a white paper the way Pranab Mukherjee, when he was the finance minister in 2012, he published a white paper on black money. If this government has the courage to inform the people about the action taken by this government to unearth black money, let the government publish a white paper on black money following the footsteps of Mr. Pranab Mukherjee, late Pranab Mukherjee. Sir, before I conclude, I would like to refer a portion of speech delivered by Honorable Justice D.V. Chandrachud, an eminent justice, jurist of Supreme Court, published in the Indian Express on August 29, 2021, wherein the Honorable Justice said, I quote, this is in public domain because it was an online address, "Speaking truth to power is not only a right, but also the duty of every citizen, and the way to achieve this is by strengthening public institutions,
such as ensuring the freedom of the press and the integrity of election, acknowledging and celebrating the plurality of opinions, and by committing oneself to the search for truth as a key aspiration of society, unquote. Hence, if I believe in the freedom of press, I cannot characterize the media as superi media. And even if I have no faith in this government, I cannot term this government as superi government, because that will be an irresponsible act on my part as parliamentarian. Justice Chandrachud also said, one line more, quote, "One cannot only rely on the state to determine the truth, as it may not always be free of falsehood," unquote. Sir, in this quest for truth, I am asking myself as to whether I should believe that New York Times is lying, Citizen Lab is lying, Amnesty Tech is lying, French government is lying, German government is lying, US government is lying, Apple and WhatsApp, who have sued NSO, are lying. Only government of India stands in splendid isolation with the truth about Pegasus. This is my submission, sir. With these words, I conclude. Thank you very much. Thank you. Honorable members, the next term was for Shri Tiruchi Shivaji, but he has very kindly consented to allow Professor Ram Gopal Yadav ji to take his spot. So I'll now request Professor Ram Gopal Yadav ji for his words. Thank you. धन्यवाद श्रीमान। संसदीय परंपरा और जो हम लोगों की मान्यताएं हैं, उसके आधार पर महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन तो करता हूं, परंपरा का पालन करते हुए, मर्यादा का पालन करते हुए, लेकिन मन नहीं इसके समर्थन करने का, क्योंकि पूरा अभिभाषण विरोधाभासों से भरा पड़ा है। एक पक्ष कहा गया है और उसके दूसरे पक्ष को बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया गया। होना ये चाहिए कि ये मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया गया, स्वीकृत किया गया एक दस्तावेज होता है जिसको राष्ट्रपति जी पढ़ते हैं, सब जानते हैं। तो जो वास्तविक स्थिति है, जो वो एक दर्पण की तरह होना चाहिए कि हम कहाँ ठीक काम कर रहे हैं, कहाँ कमी रह गई जिसको हम ठीक करके बेहतर बना सकते हैं। अगर किसी चीज़ को छुपाओगे तो वो कमियां बढ़ती रहेंगी और केवल हम वाहवाही में कुछ अच्छाइयों की ही बात करते रहेंगे, उससे काम चलने वाला नहीं। देश का हित तो इसी में है कि सबके कल्याण के लिए प्रगतिशील जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सब तक पहुँचें, ऐसा हो नहीं रहा है। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के शुरू कर रहा हूँ। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो तीसरा पॉइंट है, उसमें एक जगह चौथे पॉइंट में ही कहा है कि मेरी सरकार मानती है कि अतीत को याद रखना तथा उससे सीख लेना देश के सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि अतीत से कुछ सीखने का इन्होंने की कोशिश की है कि नहीं की है। सारी दुनिया जानती है कि जब जब लोगों ने अतीत में कुछ गड़बड़ किया है तो देश को उसके खामियाजा भुगतना पड़े। हिंदुस्तान ही नहीं, और देशों को भुगतना पड़ा, हम लोगों को भी भुगतना पड़ा। देश बट तक गया और वो विभाजनकारी नीतियों को अब इस देश में ऊपर से लेकर नीचे तक चालू करने की कोशिश कर दी गई। एक राज्य में चुनाव जीतने के लिए वहां केवल दंगा फसाद हो, इस तरह के बयान अगर देश के गृह मंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक देंगे रोजाना, भाषा पर कोई नियंत्रण नहीं, मतलब कोई उम्मीद नहीं कर सकता है कि देश का गृह मंत्री या किसी राज्य, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री इस हद तक गिरकर असंसदीय भाषा का, गाली गलौज तक का प्रयोग अखिलेश के लिए करेगा।
एक अकेले अखिलेश की वजह से प्रधानमंत्री से लेके बीजेपी तक का कोई ऐसा नेता नहीं जो पानी न मांग गया हो। भागा भागा फिर रहा है, भागा भागा। वो तो इन्होंने कमीशन के जरिए मीटिंगें खत्म करवा दी, रैलियां, वरना अभी तक इनके लोग कहीं घुस नहीं सकते थे और तब भी पिट रहे रोजाना। वीडियो देखिए, पिट रहे। तो जब गाली गलौज करोगे तो लोगों में रिएक्शन होगा। इससे ये नहीं समझते कि इससे लाभ नहीं होता है। विपक्ष का वोट यूनाइट होता है। जब अखिलेश को वोट को गाली देंगे, जब गुंडा कहेंगे, पूरी कौम को गुंडा कहेंगे, तो आपको वोट मिल जाएगा उसका कोई? अगर 100 वोट होंगे तो 1000 वोट डालेंगे वो दूसरों के, और उससे सीखना ही नहीं चाहते कुछ भी। यानी पूरे देश में अब कोई अपनी नीतियों के लिए बात नहीं हो रही है, गालियां दी जा रही है, गुंडों की बात ही है। एक उप मुख्यमंत्री, एक मंत्री, और किस सीमा तक कैसे बात करते हैं। चित्रकूट में गृह मंत्री जी ने कहा अखिलेश कितना ही जोर लगा लें, मंदिर को नहीं रोक सकते। कौन मंदिर को रोक रहा है? कौन मंदिर को रोक रहा है? ये तो मंदिर के रुपए में चोरी कर रहे, चंदे में। अखिलेश की सरकार आएगी तो मंदिर बेहतर बन जाएगा और जल्दी बन जाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। मैं सदन के माध्यम से कहता हूं, ये आप बताइए, इतने जिम्मेदार लोग इतने गैर जिम्मेदारा बयान करें, जिम्मेदारानी की बात कहें, तो ये अच्छा नहीं है। मैं कभी इस तरह की बात नहीं कहता हूं, लेकिन रोज सुन रहा हूं तो यहां कह रहा हूं, बाहर में ये भी नहीं कह सकता कि वहां समझदार लोग बैठे हुए हैं, सारे देश के लोग बैठे हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ ज्यादा तो लोग चले गए। ये मैंने शिव पुराण भी पढ़ा है, विष्णु पुराण भी पढ़ा है, तमाम पुराण पढ़े हैं, लेकिन मलिक साहब से आपने आज मैंने मोदी जी का पुराण भी सुन लिया और वो भी चले गए। प्रस्ताव रखने वाले, प्रस्ताव के समर्थन करने वाले को कायदे से सदन में रहना चाहिए कि उनके प्रस्ताव पे कौन आदमी बोल रहा है, क्या कह रहा है। वे दोनों एक भी नहीं है। प्रस्ताव रखने वाली हमारे जिले की है कहां? पहले औरैया जिला भी बना दिया बहन जी ने, बिना मांगे बना दिया। छोटा सा जिला था इटावा, टुकड़ा करके औरैया और बना दिया। और हमारे पार्टी की अध्यक्ष रही थी, चलो ये अच्छा है कि आपने राज्यसभा में बना भेज दिया। तो बोल रही थी कि इस पे तमाम बातें आगे में, बहुत ज्यादा मेरे पास टाइम भी नहीं है। इसमें आगे एक जगह है, जब आप रोजाना नारा देते हैं, माननीय जी, सरकार के लोग रोजाना नारा देते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, विकास और सबका विश्वास। अब प्रयास और जोड़ दिया उसमें, तो सबका विश्वास लेने की कोशिश होनी चाहिए। केवल नारे लगाने से कुछ नहीं हो सकता है। क्या विश्वास लेते हैं सबका? मैं अभी जब खड़गे साहब बोल रहे थे तो इधर से मंत्री लोग विरोध कर रहे थे। हमने तो बहुत दिनों पहले से देख रहा हूं, कभी मंत्री नहीं बोलते थे, लेकिन अब की देखा है कि हालांकि अभी भी जो सीजन मंत्री हैं वो नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं। नकवी साहब बोल रहे थे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर लगातार बीच में इंटरवीन कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, बहुमत आपका है, जैसा चाहें वैसा निर्णय आप करेंगे संसद में, आपका बहुमत है, जैसा चाहें वैसा कानून बना सकते हैं। विपक्ष का काम है विरोध करना, विरोध कर से करेगा, उसमें नाराजगी क्या बात? फैसला तो आपको करना है, आपको जो चाहे सो निर्णय करना है, वो होगा ही निर्णय। फिर विपक्ष को अपनी बात कहने या विरोध करने का ही तो हक है केवल। हो सकता है उससे आपका कुछ लाभ हो, तो उसको नहीं बोलने दे रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इधर के लोग अगर नाराज हो जाएं तो आपका क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन आप नाराज हो जाएंगे तो हम लोगों को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आप लोग गुस्सा मत किया करो। गुस्सा करने का अधिकार विपक्ष को ही होता है, सत्ता पक्ष को नहीं होता है। सत्ता पक्ष सुनो, भारी बनिए और सुनते रहिए। निर्णय जो लेना है आपको लेना है, तो इन्हें तो कहना है तो कहने दीजिए, सुनिए तो। ये सही है, इसमें जो फ्रंट लाइन वर्कर्स ने कोरोना काल में बहुत शानदार काम किया।
इस पैरा से हम पूरी तरह सहमत हैं। आप लोग लगातार ये कहते हैं, सरकार कहती है कि हमने रिकॉर्ड बनाया वैक्सीनेशन में। ये बताइए, देश की आबादी 126 करोड़ है, 30 करोड़ है, तो क्या इंग्लैंड जिसकी आबादी 15-20 करोड़ होगी, वो 130 करोड़ को वैक्सीनेशन करा सकता है? वो 10 बार कराया तब हिंदुस्तान के बराबर आ पाएगा। तो रिकॉर्ड की बात आप क्यों कर रहे हैं? जब दुनिया का सबसे बड़ा देश है तो स्वाभाविक है कि आप सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कराएंगे। अभी प्रस्ताव करने वाली कही थी हमारे उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ लोगों को टीके लगे, जब सबसे ज्यादा इसमें देश में, जब उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, आबादी उसकी 26-27 करोड़ है, तो उसको तो वैक्सीनेशन ज्यादा लगेगा ही। लगातार आता है कि रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड तब बनाओ, इजराइल ने 1 साल पहले 100% वैक्सीनेशन कर लिया था, आपने अभी तक नहीं कर पाया। रिकॉर्ड ये होता है कि आपने कितने % लोगों को वैक्सीनेशन कराया। देश बड़ा है तो स्वाभाविक है आपकी संख्या ज्यादा होगी, उसमें कौन सा रिकॉर्ड बन गया? हर जगह रिकॉर्ड की बात करते हो। देश की जनता बिना पढ़ी लिखी भी ये बातें समझने लगी है, इसलिए मूर्ख मत समझिए उन्हें, वो जानते हैं ये सब। अभी हम लोगों ने पूछा था हेल्थ सेक्रेटरी से और आईसीएमआर के डीजी से, भार्गव साहब से, कि क्या बूस्टर लगाना जरूरी है? तो उन्होंने कहा कि हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं आईसीएमआर के, वो इसका जवाब देने। उन्होंने सीधे कहा कि बूस्टर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर ये बूस्टर क्यों लगाया जा रहा है? मालूम क्यों लगाया जा रहा है? ये जो कंपनियां हैं वैक्सीनेशन बनाने वाली, इनको इतना लाभ हुआ है इससे, 4 पैसे की वैक्सीन के कितने कितने पैसे लेते हैं। इनके केवल डेवलपमेंट में उसमें पैसा लगता है, इसलिए शुरू में इसकी कीमत ज्यादा होती है, लेकिन बाद में कीमत वो कम होती है, तो कम करते नहीं। सारे गवर्नमेंट के ट्रेजरी का पैसा सब खा गए ये वैक्सीनेशन के जो मालिक, ये भारत बायोटेक और पूना वाला। जाने आप देखिए, अभी निकला था दुनिया के 10 सबसे बड़े उनका क्या नाम, पैसे वाले लोगों का, उसमें 7वें 8वें नंबर पर पहुंच गया पूना वाला। सिर्फ वैक्सीनेशन की वजह से पैसे से इतनी आमदनी हुई। बूस्टर की जब हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल, उनकी हेल्थ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल की उपस्थिति में हेल्थ कमेटी के सामने हमारे मेंबरान के पूछने पर ये कहते हैं कि बूस्टर की कोई आवश्यकता नहीं, फिर बूस्टर क्यों लगाया जा रहा है? क्या इससे वैक्सीनेशन, हमारे 2 बार वैक्सीनेशन हो गया, तो उसके बाद सेकेंड वेव में कोरोना हो गया, और अभी 4 दिन पहले फिर हो गया कोरोना। वैक्सीनेटेड हैं, डबली वैक्सीनेटेड, और ये बूस्टर लगे हुए लोग हैं उनके भी हो गया। कोई सब ये है कि जान को खतरा नहीं, लेकिन कोरोना होने से कोई उनसे इन्फेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। अनावश्यक रूप से गवर्नमेंट के एक्सचेकर पर और लोड डालने का काम कर दिया ये बूस्टर लगाने के लिए, कोई जरूरत नहीं, लगा रहे हैं। ये जो योजना बहुत अच्छी है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन वगैरह, लेकिन प्रश्न ये है कि जब डॉक्टर ही नहीं, अस्पताल बने हुए हैं, वेलनेस सेंटर बन गए 80,000 से ज्यादा, लेकिन अभी कोरोना काल में जब जगह नहीं थी, कहीं बेड नहीं मिल रही थी, और उत्तर प्रदेश में यहीं गाजियाबाद वगैरह, आप टीवी पे देखा होगा, कोई ऐसा जिला नहीं था जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कागज पे डॉक्टर है लेकिन मौके पे नहीं आ रहा है ही नहीं, कोई जाते नहीं, कोई इतना मिसमैनेजमेंट है, कोई देखने वाला नहीं है। इतनी आपस में लड़ाई आपके मंत्रिमंडल में है उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, कोई देखने वाला नहीं है कि ये जो बने हुए हैं इनका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम केवल इस पर लिखते रहें कि इतने वेलनेस सेंटर बन गए, इलाज कहाँ मिला है। अभी 3 महीना पहले डेंगू आया, फिरोजाबाद में कोई नई किस्म का डेंगू आ गया, 2 महीने के अंदर 1500 आदमी मर गए। हमने यहाँ भार्गव साहब से कहा, उन्होंने एक टीम भेजी, तो उन्होंने कहा कि इस नाम का है, थोड़ा सा हटके इलाज हुआ,
लेकिन अस्पतालों में जगह नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, कोई देखने वाला नहीं था, आदमी मर गया। जैसे बिना ऑक्सीजन के आपने देखा कोरोना काल में क्या हुआ था। उत्तर प्रदेश के एक कानून मंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी मुख्यमंत्री को कि सीएमओ टेलीफोन नहीं उठा रहा है, लोग बाहर मर रहे हैं, कोई पहुंच नहीं पा रहा है अस्पताल में, और सीएमओ टेलीफोन नहीं रहा मिनिस्टर का। ये बदहाली रही, इतना मिसमैनेज रहा है। लगभग 15 लाख आदमी उत्तर प्रदेश में मरा और 23,000 दिखाया। उन लोगों को कैसे मिल सकता है कोई मुआवजा? गिन लीजिए गांव गांव जाके कितने लोग मरे थे। लेकिन कोई चीज नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मुआवजा दिखाया, तो उन्होंने कह दिया जहां मरे वो मालूम क्या हुआ, दिखाया क्या गया, इनको साहब पहले से बीमारी थी, इससे मर गए, ये हार्ट अटैक से मर गए, मरे सब कोरोना से। इनके सांस की दिक्कत थी, कोरोना में तो सांस की दिक्कत थी, लेकिन कोरोना नहीं दिखाया। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, एफआई हमारे गांव में यूनिवर्सिटी है, मेडिकल हेल्थ यूनिवर्सिटी, वहां पूछा तो उन्होंने कहा कि निर्देश हैं कि कोरोना से मत दिखाइए, कोरोना से मत दिखाइए, और तमाम बीमारियां होती हैं उससे, इसकी वजह से हमारे एडमिट है, कोरोना का इलाज चल रहा है, और स्थिति इतनी भयानक रही है। कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया गया। आगरा से एक दिन, गंगा में तो खैर कौआ नोच गए, लैसें वो तो सब दुनिया ने देखी। यहाँ हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक जज को ये कहना पड़ा कि उस पर देशद्रोह का मुकदमा तो नहीं कायम हो गया है। जिसने ये दिखाया चैनल में, गंगा में लाश तैरती हुई दिखाई, उस पर कहीं सुप्रीम कोर्ट उसका देशद्रोह का मुकदमा कायम तो नहीं हुआ। ये कमेंट सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज का था, जो निकट भविष्य में चीफ जस्टिस ही बनेंगे। उनके पिताजी भी चीफ जस्टिस रहे। तो मैं बता रहा था आपको कि हालत ये हो गई थी जिसका कहीं जिक्र नहीं। रामगोपाल यादव जी, माननीय ऑनरेबल मेंबर, आपके 15 मिनट कंप्लीट हो गए। तो मैं तो बोलूंगा, और कौन बोला? कितने हो गए? आपके 15 मिनट थे, 15 मिनट कंप्लीट हो गए। एक आध मिनट और बोल दो। हमारा एक अध्यक्ष आगरा का था पार्टी, उसके बच्चे का टेलीफोन आया रोते हुए कि वो दवा नहीं मिल रही है, इंजेक्शन रेमडेसिविर होती क्या होती, उसको अगर मिल जाए तो बच जाएंगे। तो मैंने कैसे मिलेगी कि डीएम साहब के कहने से मिलता है। तो डीएम आगरा को मैंने टेलीफोन किया, डीएम आगरा ने कहा कभी एक उपलब्ध है, मैं उपलब्ध करा दे रहा हूं, कल करा दूंगा। और तो एक तो मिल गया, लेकिन चाहिए 2 थे उस वक्त, 2 ही लगते हैं शुरू में, उसको रात में खत्म हो गए। हमसे क्या, वो तो 45-50 साल का था, खत्म हो। ये दवाई नहीं कहीं मिली। तो ये है योजना अच्छी है प्रधानमंत्री, लेकिन न डॉक्टर उपलब्ध है, न दवा उपलब्ध है, तो मरीज तो मर ही जाएगा। भाई उस लाभ उठा पाए उसका, जो आप कह रहे 5 लाख वाला तभी उठा पाएगा जब दवा देने वाला कोई होगा, दवा होगी, डॉक्टर होगा। अब कौन, एम्स में कोई आ नहीं सकता, यहां वो लाभ नहीं मिल पाएगा। निजी अस्पताल इतने महंगे हैं कि कोई प्रश्न ही नहीं। कोई गरीब क्या, सामान्य व्यक्ति हो, मध्यम वर्ग का व्यक्ति वहां इलाज नहीं करा सकता। हालत इतनी खराब है, कहीं इस बात की कोई बात नहीं है। एक बात मैं कहना चाहूंगा और बस, और फिर खत्म कर दूंगा। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर को 14वें पॉइंट में कोट करते हुए राष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि मेरी सरकार की आस्था अंत्योदय के मूल मंत्र में है, जिसमें सामाजिक न्याय भी हो, समानता भी हो, सम्मान भी हो, समान अवसर भी हो। इसलिए आज सरकार की नीतियों में गांव, गरीब, पिछड़े, अनुसूचित एवं जनजातियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही। क्या व्यवहार में ऐसा है? क्या ये सच नहीं है कि इन्हीं वर्गों के खिलाफ, इन्हीं वर्गों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है, उनका हक छीना जा रहा है, हक मारा जा रहा है? अभी 7-8 दिन पहले मैंने पढ़ा, एक यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू था प्रोफेसर्स का, असिस्टेंट प्रोफेसर्स का। 31 पोस्ट में जो रिजर्व कैटेगरी में SC, ST और OBC के लिए थी, उसमें था नो सुइटेबल कैंडिडेट फाउंड, और ऑल द पोस्ट वर ट्रांसफर्ड टू द जनरल कैटेगरी। हर एक में ही कहा जा रहा है
इनमें कोई सुइटेबल नहीं, और कह रहे आप सब कर रहे हैं, केवल लिखने से होता है। जातिवार जनगणना के लिए बिहार के मुख्यमंत्री, नेता विरोधी दल, सारे लीडर्स आए, अखिलेश ने चिट्ठी लिखी, बात कही, उसमें दिक्कत क्या है? जब जनगणना हो ही रही है, हो चुकी थी पहले, तो उसको देने में क्या दिक्कत है, करने में क्या दिक्कत है? कि नहीं हो सकती, कैबिनेट डिसीजन कर दिया। हमारी प्रस्ताव करने वाली कह रही थी इतने मंत्री बना दिए, 27 ओबीसी, 20 SC ST, इन मंत्रियों को मुंह खोलने की इजाजत नहीं है। बताइए, बैकवर्ड और SC ST के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो इनका कोई मुंह खोलने वाला है कि नहीं? एक आदमी नहीं बोलता है। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन से कौन सा लाभ हो रहा है इन कम्युनिटीज को? इसलिए मैं कहता हूं कि ये राष्ट्रपति का अभिभाषण सही स्थिति नहीं दर्शा रहा है। देश की जो खराब स्थिति है और देश के कुछ राज्यों की, खास तौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिस तरह के लोग शासन कर रहे हैं, जनता घुट रही है, रात भर जग के रहते हैं खेत को बचाने के लिए गाय और सांडों से। रात भर गांव-गांव में हालत इतनी खराब है, आधी से ज्यादा फसल खा जाते हैं। जनता, किसान जो पैदा करता है, भूखों मरने की स्थिति है, यह हालत है। इसलिए मर्यादा, संसदीय मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं समर्थन तो करूंगा धन्यवाद देने का, लेकिन शुरू में ही मैंने कहा था कि मेरा मन नहीं करता है इस भाषण का समर्थन करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Honorable Member Shri Tiruchi Shivaji. Thank you, Mr. Vice Chairman. Sir, I rise to support the motion of thanks to the Honorable President for the address he has delivered to both the Houses of Parliament. Moved by my esteemed colleagues, Madam Geeta, and seconded by Mr. Malik, both of whom are not now here in the House as per the conventions. But as per the conventions, we do our duty of thanking the President. Sir, in the process of my speech, however much I tried, I hardly find anything to appreciate his entire speech to the members of Parliament, except two things. One, he quoted a couplet from Tirukkural, and another is from Dr. Baba Sahib Ambedkar. Other these two things, I think nothing is to appreciate or relish in his speech. The bedtime stories of the children are built on maximum imagination. But what they are telling now exceeds even bedtime stories. Nothing is in practice. Sir, let me quote what the President in his address told about Baba Sahib Ambedkar. My quote, "My ideal would be a society based on liberty, equality and fraternity. Democracy is not merely a form of government. It is essentially an attitude of respect and reverence towards one's fellow man." So it's only in letter and not in spirit. So I am reminded of the famous maxim about democracy: by the people, for the people and of the people. Yes, this government was elected by the people, but it's conveniently forgot its promise for working the people and forgot that it should be a government of the people. All the policies and actions of this government are anti-federal and anti-secular. Sir, our founder leader Anna, when he assumed the office of Chief Minister, his first interview in Delhi, the journalists asked him, "What is your economic policy?" Anna said, "Tap the rich and pat the poor." That was a very famous policy that he told the people and to the entire country. But now this government is tapping the poor and patting the rich. Sir, when you say the GST collection is 1,40,000 crore in 1 month, who has paid that? The poor and the middle class people, or whatever they buy, whatever they live, however they live, they pay tax to the government. But what has happened? The government, instead of addressing very core issues, the crumbling MSME sector,
the impact of the COVID, the increase in the essential commodities, the enormous increase, 69 times in 1 year, the petroleum products. The government has earned 4.91 lakh crore by way of this. From 2014, this government has earned 25 lakh crores by way of hiking the petroleum products. Instead of addressing all these issues, you are prioritizing to fighting off the minorities' rights, values, and beliefs. So it's very saddening. It is an agrarian country, economy. Basically, India is an agricultural country, but now it is becoming a corporate country. What happened to our farmers? They were sitting in the hot summer, bitter cold, and the rains for 1 year because of your Farm Acts. And you repealed it only because of the 5 state elections. Anybody would accept that it is not out of concern towards the farmers. That too, after they sacrificed 700 lives. The government should have been empathetic, not even sympathetic, empathetic. When you say, Dr. Baba Sahib Ambedkar, that we should be respect and reverence towards one fellow man, the government's duty is to protect and save every life of this citizen in this country. Whereas 700 lives were lost during that agitated struggle. But the government at last repealed that too without a discussion in the House. But what is the result? Are they happy about it? Yesterday, the Samyukta Kisan Morcha, who have fought for the farmers, have given a press release. Government betrays farmers once again. Budget exposes empty promises of government on MSP and doubling farmers' income. Because the government said we would increase the farmers' income by 200%. But now it is not so. They said by 2022. We have reached 2022, but the farmers' income have not been increased. Their inputs costs have increased. The DAP and urea, which was 1,300, is now 2,000 rupees. Which was 700 rupees is 1,500 rupees, whereas the MSP has not been increased. The producer, see, it's basically 80% of the country are basically agriculturists. During the economic recession, India survived only because of 2 things. One is public sector and the other is agriculture sector. Even during the COVID pandemic, India had food sufficiency because of our agriculture, but you are killing it. So also the public sector. See, you are giving 5G to the private sectors, but not 4G, even 4G to BSNL and MTNL. It is a silent way of killing the public sector, BSNL and MTNL. So everyone would migrate from BSNL to the private sector when they are, of course, when everyone is living in a digital world, we are for 5G, whereas they are not even able to provide 4G. They have enough infrastructure. The infrastructure of the BSNL is being utilized by other private networks. You're right. But you are giving them 5G, so what is your intention actually? You are patting them like anything. The LIC, which has got an asset of 34 lakh crores, and which is, of course, sharing its profit to its policyholders. It gives dividend to government, but you are going to kill it. You take the money that only policyholders are protected only by LIC, and you are going to take the money and fulfill the pockets of the corporates. So what is going on in this country? See, India is said to become the youngest country. The largest democracy is going to be the youngest country in the world. In what sense? 64% of its population is going to come under the working age group. What are the plans you have got? When you introduced the Make in India program, you said that 5 crore people are employed, we will make it 10 crore. But now it is 2.5 crore. You are assuring yesterday in the budget that we will give 60 lakh jobs in 5 years. That is 12 lakh jobs in 1 year. And the finance minister very happily says it is a blueprint for 25 years. And Prime Minister comes and says about it is for 100 years. Sir, what are they talking and to whom they are talking? The poor are becoming poorer. The rich are becoming richer. The richer are now becoming corporates. That is what we witness in this country now.
See, the numbers very clearly say, according to the numbers released by the Ministry of Commerce and Industry, on 14th January 2022, not much earlier, the provisional annual rate of inflation is 13.56% for the month of December 2021, whereas in 2020 it was only 1.95%. It is their statistics. This is the inflation condition. Essential commodities are hiking. People's income is not there. And your way of handling many things, people are suffering. They don't have jobs. How are you going to meet the unemployment? You don't address those issues, whereas you are talking something else. You are patronizing the corporates. And so also the inflation is borne by whom? The middle class and the lower sections only. What happened to the MSME? When it was crumbling and it was when expected a dire need of a boosting, it suffered a severe blow because of demonetization and the hasty implementation of GST. And the states surrendered their sovereignty of collecting taxes. But the promise that was given by the union government that it would give its due share to the government has not yet been. The due share has not yet been. Many states, even my state is coming and asking. Many states, representatives here would know that the GST share from the due from the government has not reached them. Then what are you doing with the collected money? You are only waiving the NPAs of corporates. See, as an ordinary poor student who gets an education loan, if he doesn't pay after a few years, he is being harassed. He is brought under NPA, he is brought under CIBIL, and they say you cannot claim any loan across India in any bank, anywhere. So a poor boy who gets a 4 lakh loan who is not able to return that is being harassed, whereas corporates who have got thousands of crores of rupees are being waived means what is the policy this government is adopting? That's what I said. You are tapping the poor and patting the rich. This is not a socialist country. You are scared of many words, as leader of opposition said. You are scared of many names and many words. Socialism, secularism, federalism, you are all scared of all those words. Sir, these are all very, very important things. We are not just accusing, alleging charges. These are what is happening in this country. When a government is elected, its duty is to take the country forward than it was. But it is dragging it backwards. India, which is thickly populated, and the people mostly who are young and who are poor are not being taken care of. So what is the future? Sir, and I have to highlight some three important things. See, in my state, Tamil Nadu, fishermen, the plight of fishermen is a continuous process. It is second what we are talking today. On 31st of this month, January, 21 fishermen from Nagapattinam and Puducherry have been arrested by the Sri Lankan Navy. 3 boats have been seized. Already 68 have been arrested, and thanks to the intervention or initiation of our Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, and of course the External Affairs Minister, they have been released, but we are waiting for repatriation. And now these 21 fishermen and 3 boats are seized, and we do not know the condition, what is going to happen. So all through the year, fishermen, when they are imprisoned in Sri Lanka, their families are languishing here. So we have been suggesting the union government has to find a permanent solution for this. Yesterday also, our leader, Mr. Stalin, has written a letter, find a solution to this. You cannot just every time they will arrest, we will go have a talk. So let the fishermen's issue has to be settled very fast. You give priorities to such issues. You are not doing that. Rather, you are attempting to encroach the powers of the state. You have got an aversion towards some region, some languages, anti-lingual, anti-region. India is famous for diversity in its unity in diversity. But it is not in practice. Some languages are totally dispensed of. Hindi is being imposed this way and that way. I even represented to the Home Minister with a genuine representation that in CRPF, for non-paramedical staff, just table boys, sweepers,
and cooks. The qualification is 10th standard, but the examination is only in Hindi and English. You cannot expect a student from a non-Hindi speaking state who has studied just up to 10th standard to appear in English. So what we suggested, let all these examinations should be at least in regional languages, if at all. Constitution. As per. Recognized by the Constitution. Recognized in the 8th schedule of the Constitution, 22 languages are there. Do that in that. So you have to not just in lip service you say we support, we encourage other language. No, you are actually killing other languages. So that was another thing we put in. See the Republic Day parade, a very ceremony which all are celebrating, and especially this is the 75th year. And all the years, all the states will not get representation, we are aware of that, but this is a special 75th year. The Tamil Nadu government gave 7 designs. The theme was Tamil Nadu's participation in the freedom struggle. There were 4 rounds of scanning by an expert committee. They say that it's expert committee. Expert committee has not come down from the sky. It's only constituted by you. The committee constituted by you drafted the national education policy, which was not accepted by even the academicians. So also this expert committee, 3 stages it approved. We have given the history of Rani Velu Nachiyar, the first ever queen who won back her territory which was lost to the British. Everyone has lost and have died. But she was the only person who regained the territory which she lost to the British. And so also Bharadiyar, everyone knows, a patriotic poet. And V.O. Chidambaram, who first launched this Swadeshi steam navigation. And Marudhu brothers, who helped Velu Nachiyar. See, all these things were not approved, saying that it is unacceptable. Where can we go and say? So I was watching the Republic Day parade on TV. Oh, anything better would have been there. But I saw only saffron-clad saints walking and on the tableau. Why are you rejecting us? It has been happening for long that South Indian, especially Tamil Nadu, the patriots or anyone, is not recognized. Why all these years? Again, the Chief Minister wrote to the Prime Minister himself. Sir, take care, please. It's very important. They didn't allow. But there is a proverb. Just because concealing a comb, you cannot stop the marriage. So you didn't accept our proposal in the Republic Day parade. What our Chief Minister did, you know? He just arranged the rally of the same tableau across Tamil Nadu, everywhere, all the districts. It goes to every street. It reaches the rural areas. So had it been here, it would have been for some minutes. Now it is going on for days, telling our people all these things. See, I have even spoken in this house that the untold stories of these people who have been hidden in history should be taught in the schools. Only one more point, sir. Another of my colleague would speak later with some points. I got only one more. So another, in the recent amendments that have been done in the IAS cadre, All India Services cadre, the government has done. What it has done, as it was earlier in existence, hereafter it won't be. What? The central government, without the consent of the state government, can call any IAS, IPS, IO officer to its service. Sir, this is again transgressing into the rights of the states. Correct. How can you do that? On whose authority? It's a federal country. Did you consult any of these people, any of the states? No. There is a group of former officers of the All India Service, around 100 have given a very, very clear statement. They have said, in the federal structure of the Union of India, the Union and the states exist as distinct and separate entities, though they work in tandem to subserve common constitutional objectives. Maintaining this balance is critical to good governance. Sir, they came to power saying minimum government, maximum governance. But now the government is maximum, governance is very minimal. No governance. No governance. He knows better.
The proposed amendments to the cadre rules of all the three AIS, All India Services, seek to working in the state to be withdrawn from the services in the state of the allotment, hits at the very core of the constitutional scheme of Indian federalism. So this is not a creation of the executive, this All India Service. It is by the constitution itself. Their experience in the state would help. But if at all you take them here, they would be serving only the center and they would lose interest in the states. And the states would also hereafter will suspect the All India Service officers. They would rely more on their own selected state officers. This is not an indication of federalism. This is not good at all. Whatever you do is snatching. You enact draconian laws. With UAPA, you put under, you imprison the social activities and minorities, and so also taking away the rights. So simply, I would like to sum up with only one thing. What is going on in this country after this party has taken up assumed power, and the president also has addressed? I could simply say that democracy is in peril. Secularism is at stake. Federalism is targeted. State rights encroached and transgressed. Economy shattered. Minorities unsafe. Public sectors crushed. This is the experience of us, nothing else. I will just say only one thing. Our Anna, founder Anna, said when he spoke in the same house, carry on, but remember. From your seat. He spoke from where you Oh, are sitting. great. Thanks, Mr. Jairam Ramesh said that from where I am speaking now, because the COVID was the place where my founder leader Anna was speaking. He said, carry on, but remember. Carry on. People have given you a mandate, but remember, the people are watching you. 2 years after, they will teach you a lesson. All those who are suffering will say what they have to. Yadi in kannir, kuriya vaadai ukku, in Tamil. The tears of the poor is much sharper than the sword. Thank you very much. Thank you, Honorable Member. Honorable Member Dr. K. Keshav Rao ji, not present. Honorable Member Shri Bikash Ranjan Bhattacharya ji. Gallery 4. Yes, please. This is the matter relating to special mentioning. No, this is your speech. You're supposed to speak on the discussion of motion of thanks on the President's address. You have 9 minutes. You are listed to speak. Yes, Chairman sir, I'm really honored to get this opportunity to speak on the motion. I thank the Honorable President to take the trouble to come to the House to address the joint session. But I really cannot support the motion after hearing the mover and the seconder of the motion. The mover and the seconder of the motion has made their ideas very clear about what is the perception of the presidential address. I was hearing the chanting of a particular name, which makes me apprehensive of a situation which I have heard in 1930s, in a particular period of time, when a particular person was projected to be the hero of the world, ruler of the world, best person in the world, and everybody was made to say, "Hey, that man." Here we really hear the same sound. That creates the danger. And that danger is reflected in the speech of the Honorable President. Here the Honorable President does not speak of the basic realities of our country. The basic realities of our country is completely different than the rosy picture which has been sought to be projected by the deliberations of the Honorable President. You will not find why the Kisans of the country had to sit 1 year and then the acts were repealed. Most surprisingly, those acts which were passed by both the houses of the Parliament, it was repealed on the Man Ki Baat. It was not even discussed in the cabinet before repealing.
Is it really the democratic process? We want to know what had happened in the meantime. Why could a particular gentleman honoring the chair of the Prime Minister of India on his own could decide to repeal the act which were passed by the both houses without having proper discussion in the House? This relates to basic question of Indian democratic system. I will refer to that later. Now I find everybody is very much worried about the COVID situation. Does really the vaccination answers all the problem of the COVID situation? The COVID situation has ruined our country and the poverty has increased. More than 33 crores of people have gone down the below poverty line. Is there any reference to that? How could it be recovered? Nothing is mentioned. And ultimately, it is unfortunate that they are claiming that they have given food to everybody. But I know because of a particular case before the Honorable Supreme Court, the Honorable Supreme Court directed the government to run the community kitchen so that the food, cooked food, can be provided to the poorest of the poor people. That itself indicates that the so-called claim of feeding 80 crores of people is only on papers. In reality, you have to go down to them, you have to think of opening the community kitchen, which has been set an example by the students and youth of West Bengal. They have shown how the poor people can be kept feeding with the cooked food during this crisis. Now we have already seen there are international reports which does not get any reflection in the President's deliberation. International report says that inequality in India has increased, widened up much during this period. More than 50% of the world's poor people belong to India. How do you address this? What is your scheme? How do you think that we can really recover these people and bring them above the poverty line? There are countries in the world who have been successful to bring all people above the poverty line, which you have no scheme to speak of. 80% of the Indian household has suffered income loss. What is your scheme? How do you think that these people could be given the source of income so that they can survive? You all talk of certain things which ultimately enriches the rich people. We have seen, this is the international report which has been referred by Oxfam and the economist Piketty's report, that the maximization of the profit during this period has gone in favor of few families. And few Indians have really got their place in the highest billionaires in the world, and the majority of the Indian has gone down the below poverty line. What is your plan? This is really lacking. We have seen that this inequality, if it is not addressed to, the Indian democracy is definitely going to suffer a lot. And to ensure that these people do not suffer, you are taking recourse to absolute oppressive measures. You are trying to destroy the Indian federal structure. I repeat, when 2014 people gave you mandate not to extol an individual's fame and favor. People gave you mandate to ensure that you carry out the constitutional dictums. You have to fulfill the constitutional dreams. Now we find, in the name of fulfilling constitutional dreams, you are destroying the secular structure of the country. You are hailing that you could build up Ram Mandir. Is this the duty of the Prime Minister of a secular country? That he will go to Ram Mandir, he will go to Kashi Vishwanath and appeal to the people, follow your Hindu culture, and thereby you create hatred against the minority community of the country? Democracy did not thought of this. Kindly go to the debate at the Constituent Assembly, we will find that it was the responsibility of the state and the government to ensure complete freedom, free from any fairness to the minority community. Now, in the name of 125th years of Netaji Subhash Chandra Bose, you have a statue over there in India Gate. Welcome the statue. But you do not welcome the philosophy of Netaji Subhash Chandra Bose.
Netaji Subhash Chandra Bose not only had said that the minorities would be respected, they should be given equal share, he had practiced it. And have you practiced it? By only installing a statue, you cannot really deny the philosophy of the man. If you really want to show respect, please follow the philosophy of the person. I can give an example. While he was the Chief Executive Officer, Municipal Corporation, Kolkata, he had found that there was no Muslim representation in the employment. He made it compulsory that more than 50% of the employment should go to the Muslims because they are part of the country. He had never thought that the minority communities, whether Muslim, Christian, or Jains, they are anti-national. They are more national than any so-called Hindus. And that was the philosophy which was preached by Netaji Subhash Chandra Bose. And unfortunately, this basic fabric when under attack does not get any reflection in the presidential address. We have seen there are hate speech. There are congregations where from open declaration of genocide is given. And our Prime Minister has not uttered a single word condemning that hatred speech. And if this is the person whom we resorted our responsibility to run the country, we think that we are in danger. Therefore, these governments should come out very clearly. Why should the Supreme Court or the High Court to intervene and ask that initiate action? Why would not the administration on its own take proactive action? Sir, you will be shocked and surprised to know that one of the student leaders who has been charge-sheeted, one of the journalists from a minority community has been charge-sheeted because he knows much better. The charge sheet says that you are a knowledgeable person, you know much, therefore you have a right to mislead the people and you go to the jail. Is this the democracy? Honourable Member, your time allotted has completed. Would you conclude? Sir, I will take just 1 minute. You have one more speaker. So I just take 1 minute. I would only quote from our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. We should remember every time his views and ideas about Indian democracy and secularism. He said, we have definitely accepted democratic process. Why have we accepted it? Well, for a variety of reasons. Because we think that in the final analysis, it promotes the growth of human beings. I repeat, it promotes the growth of human beings and of society. Because, as we have said in our constitution, we attach great value to individual freedom. Because we want the creative and adventurous spirit of man to grow. It is not enough for us, really, to produce the material goods of the world. We do want high standards of living, but not at the cost of man's creative spirit, please. His creative energy, his Yes. spirit of adventure. One sec. Not at the cost of all point these of order. Honourable fine Member. things of life. Honourable Member. 2 lines. There's a point of order. Yes. Yes, please. Under which rule, please? 238, some of the rules, some of the statements made by the honorable member, they are very treasonous, disparaging an entire community. Can I? Please, No, please. no. I'm taking the point of order. Let me take the point of order. Okay. Let me take the point of order. 238. Sir, may I complete my... Sub-point 7. Narasimha, what is 238? Which point? 7.7. Point 7. 238.7. No, 1 second. 238. Yeah, under 5, sub-point 7. Okay, you have made your point. Yeah, We will you see, examine. he has used defamatory words. I have He said seen- any minority person belonging to a I minority have religion noted your is point of more- order. Is more Honourable- patriotic than any Hindu. Honourable I think member- you cannot make such, Honourable such member- an atrocious statement. You have It's made an your point. atrocious, unacceptable. He must apologize for the remark. You have made your point. Please, 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 please. He has made a point of order. I have noted it. If there is one second. Let me complete. He has made a point of order. I have noted it. If there is anything that should not be there, will be examined and action be taken. I just want to add one thing to what Chair has said. Let that be seen
what was the quotation of Subhash Chandra Bose, and that should be retained in full. Yes. Thank you. I have Yes. just said, let me, Please unfortunately, I am not conclude. allowed We to are complete about my time speech. now. Yeah, please conclude. I was just, You have I was 10 just seconds. concluding. Please. Yeah. But not at the, I know this will hit somebody's, because of this, because they don't have any idea of the We are at democratic spirit. 2:55. I'll have to But close not at this the point cost of time. man's creative spirit. We are already at His 2:55. creative energy, his spirit of adventure, not at the cost of all these fine things of life, which have enabled man through ages. Democracy is not merely a question of elections. The question before us is how to combine democracy with socialism Thank through you. peaceful and legitimate means. Thank you. This is the democracy which prompts us to come before this House and which is the obligation of the government to follow. Thank you. Thank you, Honourable Member. We'll now go on to special mentions. The discussion will continue tomorrow. Tomorrow, yes. So My you will name be the first, yes. Yeah. You will be My the name first is- person to speak as per the schedule. Manya Yeah, Tamil please, Durai. must not be changed tomorrow. Allow me first to speak. Yes, yes. You're on the schedule. You are the first person tomorrow. Yes. Thank you. We'll be going on to special mentions due to a lack of time. We'll be closing at 3. We will not be taking the details. You just have to mention that you are laying it on the table of the House. Yeah. Yeah. Once, Shri Kailash Soni ji. माननीय सोनी जी सिर्फ सब्जेक्ट मैटर आप ले कर रहे हैं ऑन द हाउस डिस्कशन नहीं इस पे डिटेल्स आप नहीं जाएंगे ठीक है प्लीज ले करिए मैं मध्य प्रदेश के माननीय उपसभापति जी मैं मध्य प्रदेश के तात्कालिक अत्यावश्यक विषय पर जो हमारे रासायनिक खाद की तत्काल आवश्यकता है उसके संदर्भ में विषय पटल पर रखता हूं धन्यवाद प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी यस शुक्रिया वाइस चेयरमैन साहब जस्ट सब्जेक्ट लाइन ही लेकिन चूंकि विषय अति महत्वपूर्ण अगर इजाजत है अगर आप बोलेंगे तो दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलेगा 30 सेकंड 20 सेकंड भी नहीं हमारे पास समय नहीं है और आप लोग हैं। Only the subject, please. My subject is demand to define crimes of mob lynching, hate crimes and co-vigilantism, because of which the NCRB does not provide data, and this is a very serious concern Thank you. all over India. Thank you you so much. श्री विकास रंजन भट्टाचार्य जी Sir, the point is, Chittagong Marmari is one of the significant Indian independence war. प्लीज Their memorials are being destroyed. I have written to the Thank Honorable you. Prime Minister, fund is to be provided. Thank you. I have Fund made your is to be point. provided for restoration. प्लीज ले आर यू लेइंग या प्लीज ले या श्री नीरज डांगी जी प्लीज ले थैंक यू सर ये कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तैयार सूखा संबंधित ड्राउट पैनल 2016 को हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया था जिसमें कट ऑफ डेट्स जो हैं वो 31 अक्टूबर और प्लीज ले अप्रैल महीने की सर ये टेक्स्ट तो एक तो देना ही पड़ेगा नहीं किसी ने नहीं इसमें दिया, किसी इसमें को सर allow बस नहीं किया गया है। फाइनल लाइन बोल देता हूं मैं जस्ट ओनली द सब्जेक्ट फाइनल लाइन है इस पीक पीरियड में राहत गतिविधियों की अत्यधिक आवश्यकता रहती है इस कारण इसको बदला जाए इसमें संशोधन किया जाए थैंक यू डॉक्टर अमर पटनायक जी नॉट प्रेजेंट श्री जीवीएल नरसिम्हा राव जी Thank you, sir. This special mention is about the sudden outbreak of invasive thrips pest in Andhra Pradesh and Telangana, which has caused entire crop loss in the two states. And this submission is to request the central government to speak with both the state governments and provide relief to the people. Thank you so much. Shri Sujit Kumar ji. For cotton research in Kalahandi district of Odisha, which is known for producing one of the best long quality cotton in the country. Please lay. Thank you. Shri Mahesh Poddar ji. Sir, I would like to request through you to help the 23,000 medical students who are studying in China and they need immediate help because their career is at stake. Please lay. Thank you. The House stands adjourned to meet at 10:00 hours on Thursday, the 3rd February 2022.
Hello friends, and welcome to yet another episode of Economic Sutra. On this episode, I'm going to look at the economic survey that was just published a few moments ago. As you all know, this document comes out every year just before the budget. It's an important part of the budget process, and in that document, the government and specifically the economic advisors of the Ministry of Finance lay out the state of the economy and give an overview about what the government has been doing in the recent past and provide some sort of an outlook of what they expect into the future. Now, by the time you see this episode of Economic Sutra, it's very likely that you will probably already have heard about the contents of the latest economic survey. Very likely you will probably have heard a lot of analysis, debate about many of the numbers. So I was really wondering, what am I going to do that you may find of interest? Because after all, the Economics Sutra is a episode that remains on YouTube and is retelecast again and again on Sangsad TV. So what is it that I could do that may hold your interest even when you already know what the contents are? So I thought I will do something different for this particular episode and take